Assalamu alaikum. My name is Nayab and the topic that we are going to learn today is reading comprehension. What is comprehension? Reading comprehension is the act of understanding what you are reading. So it is basically the act of extracting meaning from what you read. मतलब कि आप अगर कोई पैसेज पढ़ रहे हो तो उस पैसेज में लिखा क्या हुआ है, आपको उसकी कितनी समझ आती है. एक्सट्रैक्टिंग द मीनिंग फ्रॉम दैट पैसेज के ऑथर उसमें कहना क्या चाह रहा है. इट इज़ कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. It is an intentional, active, interactive process that occurs before, during, and after a person reads a particular piece of writing. Reading comprehension is one of the pillars of the act of reading. When a person reads a text, he engages in a complex array of cognitive process. He is simultaneously using his awareness and understanding of the phonemes, individual sound pieces in a language. Now, every letter and every word in a language has its own sound and has its own meaning. And phonics is the connection between letters and sounds and the relationship between sounds, letters, and words. An ability to comprehend or construct meaning from the text. Now, when a person is reading, at a time वो read भी कर रहा होता है and जो भी वो read कर रहा होता है, it is being processed in his mind as well. So it is a cognitive process as well. It is being processed in his mind to extract the meaning of what is written in the passage. उस पैसेज में लिखा क्या हुआ है उसको समझने के लिए वो जो टेक्स्ट रीड कर रहा होता है एट द सेम टाइम उसके माइंड में प्रोसेस भी हो रहा होता है. Elements of comprehension. There are two elements that make up the process of reading comprehension. Those are vocabulary knowledge and text comprehension. Now, these two are the elements of reading comprehension. So, if you are asked in your exam that how many elements of reading comprehension are there, so you should remember that there are two elements of reading. Those are vocabulary knowledge and text comprehension. In order to understand a text, the reader must be able to comprehend the vocabulary used in the piece of writing. If the individual words don't make the sense, then the overall story will not either. Now, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हुए आपको हर एक लफ्ज़ की भी समझ आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी और आपके पास वोकेबलरी नॉलेज नहीं होगा, तो अगर आपको वर्ड्स की समझ नहीं आती तो सेंटेंस की भी आपको समझ नहीं आती, बिकॉज इट डज़ नॉट मेक सेंस. और अगर आपको दरमियान में सेंटेंसेस की समझ नहीं आएगी, सो द ओवरऑल स्टोरी विल नॉट मेक सेंस ईदर. आपको ओवरऑल स्टोरी की भी समझ नहीं आएगी, बिकॉज आप कुछ सेंटेंसेस मिस कर देंगे, उनका मतलब मिस कर देंगे, सो ओवरऑल स्टोरी भी आप उस तरह से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स वाई यू शुड हैव अ वास्ट वोकेबलरी. Now, importance of reading comprehension. Without comprehension, reading is nothing more than tracking symbols on a page with your eyes and sounding them out. Now, अगर आपको एक टेक्स्ट पढ़ तो सकते हैं पर उसकी समझ नहीं आती तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको. Imagine being handed a story written in Egyptian hieroglyphics with no understanding of their meaning. You may appreciate the words aesthetically and even be able to draw some small bits of meaning from the page, but you are not truly reading the story. The words on the page have no meaning, they are simply symbols. अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे क्लास में मोस्टली हमारे साथ पठान भी होते हैं, हमारे साथ उर्दू स्पीकिंग भी होते हैं, एंड मोस्टली उर्दू स्पीकिंग को पश्तो नहीं आती. सो इवन आप अगर उसको कोई वो अगर किसी से कोई जुमला सुन भी ले और वो याद भी कर ले, दे कैन साउंड इट आउट. वो बोल तो सकते हैं पर उनको समझ तो नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं. तो इसी तरह अगर आप एक टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, आप उसको रीड तो कर सकते हैं या आप उसको बोल तो सकते हैं, पर आपको उसकी समझ नहीं आती, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता. People read for many reasons, but understanding is always a part of their purpose. Now, लोग जो है तो मुख्तलिफ़ रीज़न्स के लिए पढ़ते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सम रीड फॉर प्लेजर, या किसी एकेडमिक पर्पस के लिए पढ़ते हैं, या कोई चीज़ रिव्यू करने के लिए पढ़ते हैं. बट अंडरस्टैंडिंग इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट. इवन इफ़ यू आर रीडिंग फॉर प्लेजर, कोई स्टोरी या कोई नावल आप पढ़ रहे हैं, स्टिल आपको स्टोरी की समझ आती है तो आपको मज़ा आता है, नहीं आती देन यू लीव इट. क्योंकि अगर आपको उस स्टोरी की समझ ही नहीं आती, व्हाई वुड यू कंटिन्यू रीडिंग इट. Reading comprehension is important because without it, reading doesn't provide the reader with any information. अगर आप किसी टेक्स्ट को comprehend ही नहीं कर पाते, तो ये जो है तो फिर आपकी information में कोई इजाफा नहीं होता. You would not get any information out of that text. Strategies for reading comprehension. So these are several strategies for reading comprehension.
it is generating questions. Now you should generate questions like what the author has said in the certain passage, what is the main idea of the passage, कि ये ऑथर ने इस पैसेज में क्या लिखा है, इस जो पैसेज है इसका मेन आइडिया क्या है. सो यू शुड जनरेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द पैसेज, कि आपको उसकी समझ आती है कि नहीं आती, वेदर यू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज और नॉट. रीड अलाउड एंड मॉनिटर. तेज़ तेज़ रीड करें, तेज़ आवाज़ से रीड करें एंड मॉनिटर, देखें कि आपको इस चीज़ की समझ आ रही है कि नहीं आ रही. टेक नोट्स, अपने साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें, मेन आइडियाज़ नोट करें. एंड समराइज. नाउ देन समराइज द होल पैसेज दैट यू हैव रेड. Practice PQ4R. This consists of 6 steps. That is preview, question, read, reflect, recite, and review. So it is one of the strategies for reading comprehension. You should remember the PQR strategy. You might be asked that which of the following is a strategy for reading comprehension, and you would be given the PQ4R, or you might be asked that what does P stand for in PQ4R, or what does R stand for, what does Q stand for. So preview is student scan the material to get an overview. The question means that the students should ask themselves questions as they read. Now preview का मतलब है कि पहले जो पैसेज आपको दिया गया है, यू जस्ट स्कैन इट, आप उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स स्कैन करके ढूंढ देते हैं. देन क्वेश्चन, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑथर ने इस पैसेज में क्या लिखा है, किस चीज़ के बारे में लिखा है, इसका मेन आइडिया क्या है. अगर किसी सर्टेन टॉपिक के बारे में लिखा है तो अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, उस टॉपिक के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पैसेज में दी गई हैं. दीज आर सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ व्हाइल रीडिंग. The 4 R's have students read the material. Now you should read the material thoroughly and carefully. Reflect on what has just been read. Now reflect that what you have read. कि आपने क्या पढ़ा है, इस पैसेज में क्या दिया गया था, आपको उस चीज़ की कितनी समझ आई. देन रिसाइट द मेजर पॉइंट्स टू हेल्प लर्न बेटर. जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको रिसाइट करें दोबारा से. एंड देन रिटर्न टू द मटीरियल एंड सी इफ़ यू कैन आंसर द क्वेश्चंस प्रीवियसली आस्क्ड. नाउ फिर दोबारा से देखें कि आपने जो ख़ुद से क्वेश्चंस किए थे, वेदर यू कैन आंसर देम नाउ और नॉट, आप उसका आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते. तो इससे आपको पता चलेगा that how much you understood this text. Reading comprehension skills. Here are 6 essential skills needed for reading comprehension and tips on what can help kids improve the skills. Now you might be asked in your paper that how many skills are there for reading comprehension. So there are 6 essential steps for reading comprehension, and those are decoding. Decoding is a vital step in the reading process. Now decoding means that whatever is written in the text, आप उसको decode करें, आप उसको understand करें, कि राइटर ने जो टेक्स्ट में लिखा है आप उसके टोन से, उसने जो मेन आइडिया दिया है उसको आप फाइंड आउट करें, डिकोड करें. जो सर्टेन वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं टेक्स्ट में, किस तरह के वर्ड्स यूज़ किए हैं, कौन सा टोन उसने यूज़ किया है, यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ देम. फ्लुएंसी. एंड फ्लुएंसी मीन्स दैट आप जो है तो फ्लुएंटली एक टेक्स्ट को पढ़ रहे हो. अगर दरमियान में फ्लुएंसी ब्रेक होती है तो इससे भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं और फिर आपको टेक्स्ट की सही तरीके से समझ नहीं आती. वोकैबुलरी, as we have already said that it is one of the basic elements of reading comprehension, so you should have a vast vocabulary. because अगर आपको दरमियान में किसी वर्ड की समझ नहीं आती या किसी सेंटेंस की समझ नहीं आती तो फिर आपको स्टोरी की भी ओवरऑल ठीक से समझ नहीं आएगी. सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड कोहेशन. You should see the sentence structure, the sentence construction and the cohesion, reasoning and background knowledge. Then आप अगर किसी certain topic के बारे में आपको passage दिया गया है, so you should relate कि आपके पास इस topic के बारे में पहले से कितना prior knowledge कितना है. You should relate this passage to your prior knowledge. And working memory and attention. Now working memory and attention is you should read the text attentively and thoroughly. आप जो text है उसको attentively read करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी, and you would be able to remember the details and the answers that are given in that text.
So it was all about reading comprehension. Thank you so much.